बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अज़ीज़ तुलबा। आज हम पीटीबी की बुक में जो हमें स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग यूनिट नंबर 8 दिया गया है, इसकी हम समरी करेंगे। तो ये सबसे पहले तो ये समरी जो है ये पोएम लिखी गई है, स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग इसका टाइटल है और इसके पोइट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो चलिए इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। The poem Stopping by Words on a Snowy Evening has been written by a well-known American poet, Robert Frost. In the poem, he describes his personal experience of stopping while he is passing through snowy woods on the darkest evening of the year. These woods belong to one of his friends who lives in the village. He can't see him stopping there. The poet and his horse are between the snowy woods and the frozen lake. The poet can't hear any sound instead of light wind and soft flakes. As soon as he starts to gaze the snowy woods, his horse thinks it's strange to stop between the woods and the frozen lake because there is no farmhouse nearby. The horse impatiently shakes the bells of his harness to ask if there is something wrong. The poet is captivated by the beauty of the dark, deep, and lovely woods, but the jingling of bells remembers him his promises to fulfill and also his other obligations of practical life. The poet is tired and sleepy, but he can't stop there to take a rest and to enjoy the beauty of these snowy woods. He has to travel a long distance before going to bed. अगर आपने इससे पहले ये नहीं देखा कि समरी कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए हाउ टू राइट अ समरी इसी पोर्शन में जाएं और उस चैनल में इस टाइटल के साथ जाकर उसको देखें कि समरी लिखने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स ज़रूरी हैं और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो इंशाल्लाह दे विल हेल्प यू अ लॉट। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।